Hello and a very warm welcome. Thanks for tuning in to News 9 Live. On this special broadcast on Cyclone Dana, over the next 30 minutes, ladies and gentlemen, we'll tell you all that the states of Odisha and West Bengal are doing in terms of preparedness. What does the Chief Minister have to say? Why is this cyclone called Dana in the first place? What kind of a cyclone is this? Where is it going to be making landfall? And should you be worried? The next 30 minutes on Cyclone Dana. But before that, the top headlines we're tracking for you at the top of this newsreel. But there seems to be no end to the flight threats in India. 95 flights, including Air India, Indigo, Vistara and Akasa, received bomb threats yet again. 85 flights, to be precise. India-Canada diplomatic standoff. Canada's Prime Minister Justin Trudeau pressured to resign by backbench members of parliament within his own party as 20 MPs called on their leader to resign before a likely electoral drubbing in the next election. The West Asian conflict spiraling into other parts of the world. 2 people have been arrested in Sri Lanka on suspicion of planning a terror attack on Israeli nationals in the country. Israel has issued travel advisory over the threat. Odisha and West Bengal on Cyclone Dana alert. Red warning issued for 7 districts of Odisha. More than 30% of the targeted 1 million people moved to safer locations. Days after the Ganderbal terror attack, another non-local civilian targeted. UP labourer shot at by terrorists in Jammu and Kashmir's Pulwama. Meanwhile, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah visited the site where an under-construction, deemed illegal building collapsed, killing 8 people. Took stock of the situation. The Chief Minister's office has announced an ex gratia of 5 lakh rupees each. In a tragic incident being reported from Bengaluru, a 5-year-old boy died after falling into a 5-foot deep, water-filled open pit at a construction site. Stubble burning incidents decline in Punjab and Haryana, but the air quality in the Delhi National Capital region remains within the severe range. Amid unfavorable Met conditions, no relief expected for residents of the national capital in the immediate future. A DDMA meeting chaired by the Lieutenant Governor was held over the pollution woes as well. And after the terror attack in Ankara, Turkey hits PKK targets in northern Iraq and Syria. But our top focus continues to remain on Cyclonic Storm Dana, which is approaching coastal Odisha and is set to make landfall tonight, ladies and gentlemen. The storm is expected to bring heavy rains and thunderstorms, potentially impacting nearly half of Odisha's population and the southern part of West Bengal. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi reviewed the state's preparedness earlier on as well. Let's quickly listen in to what the Chief Minister had to say. What is the IMD and other officials, major important stakeholders saying at this point in time? साइक्लोन मुकाबला के लिए राज्य सरकार संपूर्ण रूप से तैयार है, इसलिए हमारा हर लेवल पे तैयारी चल रहा है और नियमित रूप से समीक्षा टाइम टू टाइम हो रहा है। आज मैंने और एक समीक्षा किया था। हमारा लक्ष्य है 0 कैजुअल्टी, इसलिए जितने सारे लो लाइन एरिया है, जितने सारे वनरेबल जगह है, वहां से 100% इवैक्यूएशन करने के लिए तुरंत काम किया जा रहा है। हमारा टारगेट था इवैल्यूएशन करने के लिए 3,62,000 लोगों के इवैक्यूएट करने के लिए। अभी तक लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट इवैक्यूएशन हो गया
अभी तक 2300 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को भी सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान में रखने के लिए जो हमारा साइक्लोन शेल्टर 7000 से ज्यादा वो तैयारी और स्वतंत्र भाव में उनका व्यवस्था किया गया है। उसमें से सबको रखा गया है। इसके लिए अतिरिक्त मेडिकल टीम और वेटनरी टीम का भी डिप्लॉय किया गया है। But now Odisha is on high alert as Cyclone Dana approaches, with authorities ensuring the continuity of essential services across the state. It is going to be dangerous and treacherous to make sure that that is executed. In response to the impending cyclone, schools and colleges have been ordered to stay shut, and an advisory has been issued to fishermen, urging them to avoid venturing out to the sea. Now, the government has evacuated at least 11 lakh people from vulnerable areas, with the evacuation drive actively underway in 3,000 villages across 14 districts. My colleague Kumar Kundan joins us on the broadcast here live from Dhamra Port. Let's get a quick update of what the conditions at sea look like at this point in time. Kumar Kundan, if you can hear us at this point in time, firstly, many thanks for joining with us. What do the conditions at sea look like at this point in time in terms of the evacuation, the preparedness of the state? What can you tell us? Hi Kabir, right now I am standing in front of Dhamra Port. I'm just my camera person requesting to just show the pictures of Dhamra fishing harbour. This is the place where according to IMD the cyclone Dana is expected to make landfall between Bhitarkana National Park and Dhamra Port and today evening. And right now you can see the water level is rising. I think early in the morning we were here and that time water level, and right now water level there is a 2 to 3 feet up above all. There are local people, we are just asking. एक बात बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे पानी का लेवल वगैरह बढ़ा है सुबह से? पानी का लेवल सुबह से अभी ज़्यादा हो गया। अभी ज़्यादा हो गया है। सारे जहाज वगैरह को हटा दिया गया है? हटा दिया है, वो दूसरे नदी पे हटा दिया है। अच्छा, उधर जो सेफ साइड की ओर चला सेफ साइड का। और क्या एक्सपेक्ट है कितने बजे लैंडफॉल होगा? लैंडफॉल 10 बजे होगा, रात के 10 बजे। रात के 10 बजे होगा। मौसम पूरा एकदम बन गया है? हाँ, बारिश तो सुबह से हो रहा है। बारिश सुबह से हो रहा है। और आप लोगों को कुछ डर वगैरह भी लग रहा है? हाँ, डर तो लग रहा है। अच्छा, अभी इधर होने वाला है तो डर लगेगा ही। अच्छा, गवर्नमेंट का जो तैयारी है उससे आप लोग खुश हैं? हाँ, वो खुश है। गवर्नमेंट बहुत सही से अभी तक तैयारी सही है। देयर आर लॉट्स ऑफ मेनी पीपल आउटसाइड। सर, एक बात बताएं कि किस तरीके से इस बार का तैयारी आप लोगों को लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा यहाँ पे? यहाँ पे अब कैसे होगा, जो होगा भगवान, मतलब सब कुछ अब भगवान भरोसे बच गया है? भगवान भरोसे हैं हम। और हवा की रफ्तार वगैरह धीरे धीरे बढ़ रही, घट रही? सुबह से ही बढ़ रही है हवा की रफ्तार, बारिश बहुत ज्यादा। और नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, समुद्र सागर का भी? जी, नदी का भी, सागर भी बढ़ रहा है। वो सुबह से पानी भी बढ़ गया है पूरा ज्यादा। और कितना पानी आएगा तो ज्यादा परेशानी हो सकती है? और इसका ये बराबर हो जाएगा तो परेशानी होगा। ओके जी, तो मतलब पोर्ट पे जो ये फिशिंग हार्बर है, यहाँ थोड़ा पानी और आए तो एक तरह से हार्बर पे पानी आ जाएगा। जी। So Kabir, this is the situation right now. We are standing in front of the place where landfall is expected, and just because of heavy rain, the water level is increasing, and probably next 2 to 3 hours, the water level will submerge this area. That's why the fear factor is roaming around everybody whosoever is standing here. Kabir. We're looking at all these people that are still around you. At least 11 lakh people have been evacuated. That's what we're picking up from the local authorities. But you know, a couple of youngsters also that I could see right behind you. In this situation, aren't they worried about the landfall? Shouldn't they be making their way towards safer places? Kabir, actually everybody has already left from his home, but the only problem is only one person in every home. They are standing here. They just wanted to look after their belongings. I'm just asking, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? सब लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आप लोगों को भी जाना चाहिए? लग रहा है? नहीं, नहीं रहना। क्यों लगेगा?
नहीं तो लैंडफॉल आ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है सब लोग खाली करो खाली करो। गवर्नमेंट है ना साथ में। अच्छा गवर्नमेंट साथ में है, सब सुरक्षा किया है। जिन लोगों के पक्के के मकान है वो लोग हैं यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे है। कच्चे मकान वाले लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। घर छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा। सरकार ले गया है उन लोग। अभी अगले 8 से 10 घंटे आपको नहीं लगता बहुत क्रूशियल है? होगा तो क्रूशल। हाँ। क्रूशल तो होगा, डर नहीं लग रहा है। हाँ। क्योंकि हम लोग बेहतर फेस किया है। अच्छा पहले से भी आप लोग साइक्लोन को देखते हुए आए? आए। मतलब ये पहला मौका नहीं है जब साइक्लोन आपने देखा है? पहला मौका नहीं है। लेकिन धमारा में तो पहली बार लैंडफॉल होगा ऐसा बताया जा रहा है। हमारे में पहली बार होगा। हाँ। हम लोग को नहीं लगता कि इतना बड़ा ये होगा। अच्छा आप लोग भी इस इलाके में ही रहते हैं, क्या लग रहा है क्या स्थिति होने वाली है? तो डर लगता है। डर लगता है? डर लगता है, वो बोलता है लैंडफॉल यहाँ पर होगा, वहाँ पर क्या वो लैंडफॉल हुआ नहीं। अच्छा आज तक कभी धमारा में लैंडफॉल नहीं हुआ? नहीं हुआ, इसलिए वो जान नहीं सकता। अच्छा पहली बार लैंडफॉल होगा तो आपको लग रहा है कि क्या होगा कैसे होगा? क्या होगा वो सोचना है, क्या हम तो नहीं जानता। अच्छा क्या होगा और उधर नेशनल पार्क भी है, उसकी क्या स्थिति है? स्थिति है वो हरिण है, बारह है, वो सब जंतु है ना। हाँ जीव जंतु जीव जंतु है। हाँ। किम्बिर है, मगरमच्छ है बड़ा बड़ा है। अच्छा तो क्या है? So Kabir, this is the situation. Somebody is saying that there is a fear factor among us. Somebody said no, we are habitual of these kind of things. So it depends person to person and situation to situation. But yes, the weather is completely. I mean, I can tell you, the rain is there is raining. I mean, some parts of this area near about Bhadrak, near about Balasore, near about Chandipur, near about Bhetarkhana. There are so many places where raining. But right now we are standing in front of harbour, Dhamara harbour. There is rain is likely to be occur, but I don't know what will happen when the landfall will expected to here. Certainly. It's great to see that people are fearful, but some have confidence over the government's preparedness as well. Looks like the calm before the storm. Kumar Kundan, requesting you to do stay on with us. We're going to keep coming back to you. This is a special program on the Cyclone Dana and its landfall. Now, ladies and gentlemen, to handle the situation, 20 teams from the National Disaster Response Force, that's the NDRF, and the State Disaster Response Force, that's the SDRF, have been deployed on the ground. We're talking about above 50 teams in both the states of West Bengal and Odisha combined. They're all prepared to carry out rescue and relief operations. Now, understand, in preparations for the Cyclone Dana, the West Bengal government has formed a 7-member team of principal secretaries to oversee the humanitarian assistance and disaster relief operations. At least 10 National Disaster Response Force, that's the NDRF, teams have been deployed equipped with advanced life-saving and relief gadgets to assist the rescue efforts. Flight operations have taken a hit. Kolkata airport has suspended as a precautionary measure, as many as all its operations. The trains running through the Southern Eastern Railway jurisdiction, essentially Sialda, all up and down trains, they've been closely being monitored, many of them being cancelled, almost 350 trains that have been cancelled. But let's quickly take a look at what the path of this cyclone is now going to be looking like. We must understand that it's going to spare a little bit of West Bengal, but it's Odisha that's going to bear the brunt of it all. Understand where it's going to come from. The Bay of Bengal is where the deep depression actually happened. It started moving northwestwards towards our coast of Odisha and West Bengal. Now, this is exactly where it's going to make landfall. The Paradeep and Dhamra port, which is also right between the Bhitarkanika National Park, where you've got lots of foliage and fauna, lots of animals over there as well. And you've got Bhubaneswar, Balasore. These are the essential areas that are going to be affected in Odisha, sparing West Bengal. But South 24 Parganas and Medinipur are two districts in West Bengal that are going to be facing the brunt of this cyclone as well. My colleague Ravi Shankar, he's filed in a report in terms of what the governments are doing for the preparedness. Listen in, take a look. दीघा का जो तटवर्ती इलाका है वहां पे साइक्लोन दाना के लिए जो लोगों को साइक्लोन सेंटर में लाया गया है, इस वक्त वही एक साइक्लोन सेंटर में मैं हूं। यहाँ पे चांदपुर साइक्लोन सेंटर आप देख सकते हैं। यहाँ के जो इलाके के लोग हैं उनको यहाँ पे शेल्टर दिया गया है और वो लोग उनको खिलाए यहाँ पे जा रहे हैं। जो लोग अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आए हैं, जिनको यहाँ पे कहा गया है आने के लिए, क्योंकि उनका घर या तो मिट्टी का है या तो फिर कच्चा घर है, उन लोगों को यहाँ पे रखा गया है। सरकार की तरफ से हर कोई व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे जो लोग हैं आप देख सकते हैं। हमारा घर इधर ही नज़दीक है, तो ये पंचायत है ना हमारा इस इलाका में, तो इधर समंदर का अभी हालत खूब ही ख़राब है। तो इधर का काफ़ी 100-150 आदमी अभी आ चुके हैं।
तो शाम तक और भी बढ़ जाएगा। शाम तक मेरे ख्याल से 150-200 के ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। देखिए प्रधान भी मैडम भी यहाँ पे, उनके साथ भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार व्यवस्था देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लोगों को यहाँ पे रहने के लिए इंतजाम किया गया है। हालांकि ठंडा का मौसम नहीं है, इसीलिए रजाई वगैरह नहीं रखा गया, लेकिन लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और बाकी का यहाँ पे जितने सारे रूम्स है वहाँ पे भी रखा गया है, उनको वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। देखिए ये तिरपल वगैरह रख के, ताकि पानी में कोई असुविधा ना हो, वो यहाँ पे रखा गया है रूम। जो लोग गांव में हैं, जिनका घर टूटने के कगार में है, या तो पिछली बार साइक्लोन में टूट चुके थे, वो डरे हुए हैं, उनका रूम यहाँ पे बनाया गया है अभी, जब तक ना यहाँ के ये जो साइक्लोन दाना है वो वापस चला जाए। तो मैडम यहाँ पे हैं, उनके साथ थोड़ा बातचीत करेंगे। लेकिन ये कहना ज़रूरी है, सरकार की तरफ से हर वो व्यवस्था किया गया है ताकि लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, यहाँ पे जो लोग ठहर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ का व्यवस्था ये दिया गया है ताकि वो लोग यहाँ पे रहे, अपना साजो सामान लेके वो आ रहे हैं। क्योंकि जितनी बार दीघा इलाके में तूफान हुआ है, जितनी बार यहाँ पे ऐसा साइक्लोन आया है, तो ऐसे फ्लड रिलीफ सेंटर या तो साइक्लोन सेंटर बनाए इसीलिए गए हैं ताकि लोग यहाँ पे रह सके और यहाँ का जो लोग हैं उनको कोई असुविधा ना हो। क्योंकि पिछली बार ऐसा बार हुआ है कि उनके घर टूट गए थे, या तो टूटने का कगार में थे, या तो पानी घर के अंदर आ गए थे। इसीलिए अपना जितना भी सामान है, साइक्लोन के समय वो लोग ये साइक्लोन सेंटर में आ चुके हैं और वो तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक सुरक्षित उनको वापस ना भेजा सके, या फिर ये जो साइक्लोन दाना आ रही है उसका पानी वापस ना चला जाए। Well, my colleagues Ravi Shankar and Kumar Kundan are braving the gusty winds and bringing us these ground reports. Kumar Kundan continues to be with us on the broadcast as well. But let's quickly also talk about Cyclone Dana, which has been categorized as a tropical storm. Let's take a look at what exactly is a tropical storm. Now, a tropical cyclone essentially are those that develop in the regions between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, right near the equator essentially. They are most devastating storms on Earth, according to Met scientists, and such cyclones develop when thunderstorm activity starts building close to the center of circulation, and the strongest winds and rain are no longer in a band far away from the center. An amalgamation of all of this turns into a tropical cyclone. The core of the storm turns warm, and the cyclone gets most of its energy from the latent heat released when the water vapor that has evaporated from the warm ocean water condenses into liquid water. That's what a tropical cyclone essentially means. They're also called typhoons, they're called hurricanes in different parts of the world, but they are the most dangerous forms on this planet at the moment. Joining us on the broadcast is Kumar Kundan, joining us from Dhamra Port. Let's again go back to him. What happened in Dhamra Port? Let's understand. Kumar Kundan, you know, what are some of the most important challenges or concerns of the people that have been evacuated over there? We earlier heard that, you know, one member from each family is staying back. They're trying to assess what kind of damage happens, what doesn't happen. But immediately, what is the biggest challenge and the concerns of the residents over there? Listen, Kabir, the biggest challenge is the security of the people, and biggest challenge is now there is the raining. There is everybody is going here and there because we were talking about the raining, and now the situation is getting worse because of rain. So we have to also go from this harbour area to safest area just to avoid the unwanted rain. But one thing is very much clear. You were talking about what is the point. Point is very much clear that first of all they have to secure themselves. According to Chief Minister, we are concentrating about the lives of the people. But again, there are some infrastructure work is also in this near about this port. Like Adani Port is very much near there, and if landfall is expected here, then must be some problematic situation or some infrastructural related damage could be done. So government and everybody is trying to secure these things and just trying to maintain the cool and calm situation as well as the lives of the people. Just they are waiting for what exactly is going to be happen after 2 or 3 hours, because landfall timing was expected to 12 midnight to early in the morning 5.
but according to our source said it's preponed, probably 8 in the evening or 9. So basically it's a 4.5 hour time period where the landfall will expected to reach here, and then what will happen only God knows. Well, absolutely. It seems like the preparedness has been going on in full swing. The NDRF, the SDRF, it has started raining as well, just like Kumar Kundan is telling us at this point in time. But Cyclone Dana is moving towards the Bengal, Odisha coast with landfall expected between, like we were mentioned, Bhitarkanika and Dhamra port in northern Odisha, approximately 350 kilometers from Kolkata. Now, it is projected to strike as a severe cyclonic storm with wind speeds reaching up to 120 kilometers. It will then slightly curve towards Odisha. The areas most likely to be impacted by the cyclone include Paradeep, you've got Dhamara port, you've got Bhubaneswar and Balasore in Odisha, but Dana will partially spare West Bengal, like we've been mentioning all throughout the day. Its coastal districts of Purba, Medinipur and South 24 Paraganas that you can see right up there on the top, the grey area up on top, they're likely to face the brunt of the cyclone as well. My colleague Caesar Mondal, he was earlier at the Dhamra port, and this particular ground report will essentially tell you the wind speeds that can and are likely to gust up to 120 kilometers per hour. You can pretty much hear it on his microphone. Listen in. I'm now standing at Dhamra port where Cyclone Dana is likely to make landfall. It's 6 kilometers away from Dhamra port. It's Chandanipal area, and behind me, this is not the main sea. It's the confluence of Baitharani River and Bay of Bengal. And since midnight, the weather totally changed. It's raining and the water is gradually swelling and the wind speed is increasing. It's now difficult to stand here, and this is the clear indication how the Dana will impact when it will hit the area, and the locals are very much scared because they have a previous experience of years. During years, it will hit this area, it moved through the area and it impacted heavily. There is major devastation in this area, and now locals mostly they take shelter in the nearest cyclone relief center and other places, other highlands are there apprehending if the Dana cyclone hit in the midnight. At that time there will be the high tide and generally the water level will be high and it may entirely flood. It could flood the entire area, entire locality, and they're apprehending Dana may cause major devastation in this area. Well, we've got a fair share of idea what's really happened in terms of preparedness. People have been evacuated, almost 11 lakh people that have been evacuated, 50 plus teams of NDRF and SDRF that have been deployed, many on standby mode in both the states of Odisha and West Bengal. It is going to make landfall between Bhitarkanika National Park and Dhamra port. That's going to be the main point. And then it's going to at least affect half of Odisha's population. Safety measures are already in place. It is going to sparingly move across from West Bengal. That also is understood at this point in time. But what is the NDRF likely to do? They have advanced machinery, you've got tree cutters, any kind of ordeal that comes their way. It seems like the NDRF is prepared for it. My colleague Ravi Shankar, he earlier spoke to the NDRF Deputy Commandant. Listen in to what they had to say. अभी आप लोग यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट किए हैं किस हिसाब से किए हैं और क्या प्रस्तुति रखे हैं? जी, मेरा नाम संजय कुमार रंजन है। मैं डिप्टी कमांडेंट हूँ एनडीआरएफ कोलकाता की तरफ से। मेरी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हुई है। मैं यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज हूँ ईस्ट मेदिनीपुर और हुगली डिस्ट्रिक्ट के लिए। यहाँ पे ईस्ट मेदिनीपुर में हमारी 3 टीमें 100 प्लस के स्ट्रेंथ में डिप्लॉय है और एक टीम हमारी हुगली में डिप्लॉय है जिसका मैं ऑफिसर इंचार्ज हूँ। बेसिकली जैसा आपने बताया पहले अपने ब्रीफिंग में कि साइक्लोन दाना के प्रभाव से जब लैंडफॉल यहाँ पे होगा तो जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ज़्यादा की हवाएं और तेज़ बारिश के साथ चल सकती हैं। तो इट्स एक्सपेक्टेड में बी ए डिवास्टेटिंग कॉज नियर द कोस्टल रीजन्स। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। तो जैसे हमारा प्रशिक्षण दिया जाता है कि जैसे लोग डिजास्टर से निकलते हैं, हम डिजास्टर में जाके काम करते हैं। तो ये सारे प्रशिक्षण के आधार पे जो हमारे रेस्क्यूअर्स आप सामने देख रहे हैं, दे आर वेल ट्रेंड। इनको नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर है। टर्की में भी इस टीम के कुछ लोगों ने वहाँ पे जाके ऑपरेट किया हुआ था। तो ये सब आपके समक्ष जो भी हमारी तैयारी है वो दिख रही है। बेसिकली जब से टीम डिप्लॉय हुई है पिछले 2 दिनों से इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के हमने इवैक्यूएशन का काम कंप्लीट कर लिया है। जितने भी लो लाइंग एरियाज इस डिस्ट्रिक्ट में थे, दे ऑल हैज बीन शिफ्टेड टू द सेफ प्लेसेस। इन केस अगर कुछ रह जाता है और रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है तो आवर टीम्स आर रेडी फॉर 24/7 ऑपरेशंस विद फुली स्किल्ड, फुली लोडेड।
साइक्लोन दाना लैंडफॉल होने वाला है और इस वक्त मैं हूँ दीघा पे और दीघा के जो यहाँ पे साइक्लोन सेंटर है वहाँ पे एनडीआरएफ ने अपना टीम बनाया है। तो सबसे पहले आपको इनका तैयारी जो है, प्रस्तुति जो है वो दिखा देते हैं। देखिए जितने भी सारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स है, ये सारे पेड़ काटने के लिए या तो फिर लोहे काटने के लिए ये सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे रखा गया है। एनडीआरएफ का जो टीम है आप देख सकते हैं वो अपना पूरे ड्रेस में यहाँ पे खड़े हुए हैं। जहाँ पे भी रेस्क्यू की जरूरत होगी वो वहाँ पे पहुंच जाएंगे। इनके और भी सारे इक्विपमेंट्स है वो एक बार मैं आपका कैमरामैन को बोलूंगा दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे फोल्डेबल बोट्स यहाँ पे रेडी है, उनका हेलमेट, जूता, लाइट, सर्च वगैरह सब कुछ यहाँ पे रेडी है। 2 बोट्स यहाँ पे रेडी है, जनरेटर रेडी है, ट्यूब्स यहाँ पे रेडी है। तो सब कुछ वो रखा गया है जो कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरी है। कैमरामैन को एक बार कहूंगा, देखिए ये सारे वो चेहरे हैं जो अगर कोई यहाँ पे तूफान आ जाती है या तो लैंडफॉल होने के बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है तो ये वो सारे चेहरे हैं जो कि अपना जीवन दांव में लगा के लोगों के हेल्प करेंगे, मदद करेंगे और वो पहुंच जाएंगे वहां पे जहां पे आम लोग नहीं पहुंच सकते। इनके पास सारे वो इक्विपमेंट्स है जिसके चलते लोग की जो जीवन है टू टेक प्लेस बिटवीन भितरकनिका नेशनल पार्क एंड ऑफ कोर्स Dhamra port this very evening, but the West Bengal government says that it is going to continue to monitor the entire situation all throughout the night, ladies and gentlemen. Some visuals that we have for you, what the wind speeds at the moment look like. We're looking at almost 14-15 districts in Odisha that are going to be affected, almost 7 districts in West Bengal that are going to be affected, 11 lakh people, that's 1.1 million people that have already been moved to safer locations. The fishermen have been urged not to venture out into the sea. This is the first time the cyclone is making landfall on this particular region of Odisha's coast. Odisha and cyclones, it's not something new for the state of Odisha or for the state of West Bengal. Biparjoy was the most recent one that the state just had to battle. Let's hope for good sense to prevail. Let's hope that we come out of it with as little damage as possible. Everything that had to be done by the government is already in place. People have been evacuated. Fishermen urged not to move out. We'll have to wait and find out as to what happens in terms of the aftermath. Let's hope that good sense prevails and we come out of it unscathed. Let yourself flow with the turn of each tide. Salty winds, you sweeten your ride. Maharashtra, Maharashtra, it's a hit. Maharashtra tourism. For the very first time in our investigation, we unmasked the killer of Ravindra Matre. In 5G, we have to stand with the world, and in 6G, we have to lead the world. Winning a Grammy was an absolutely surreal experience. I'm Payal Nath, the CEO and director of Kadam Heart. We are working with people, we are working with emotions, we are working with hands, we are working with nature. We are very clear, we want to commit to livelihoods, we want to commit to the planet.